Assalamu alaikum, my dear students. In the last video, we were reading a poem from class 10th English. The name of the poem was An Evening Wet with Rain, written by Kamla Das. Written by Ved Pal Deep. Students, today we will read the exercise of the poem and thinking about the poem. What are the question number 1 is what are the memories that the poet talks about in the poem? Answer: the poet talks about the memories of his childhood when he would stand alone in the courtyard and listen to the sound of cymbals brought to him by the waves of air. इस क्वेश्चन है ये है व्हाट आर द मेमोरीज दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द पोएम. बच्चा इस पोएम में जो हमने जिस बच्चे के बारे में पढ़ा वो अपने बचपन की कौन सी चीज़ों को याद करता है. तो हम इसका आंसर लिखेंगे द पोएट टॉक्स अबाउट द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वुड स्टैंड अलोन इन हिज कोर्टयार्ड एंड लिसन टू द साउंड ऑफ सिम्बल्स brought to him by the waves of air. Question number 2 is what kind of atmosphere is created in the poem? इस पोएम में किस किस्म का माहौल तैयार किया गया है. The atmosphere created in the poem is that of sadness, hopelessness and depression. It is a rainy evening. Everything is wet with rain. There is darkness and silence all around. The poet feels that his life's evening is equally dark with troubles and misfortunes. What makes poet tired? Poet को कौन सी चीज़ थका देती है, हरा देती है. The poet is walking through the lane in a rainy evening. He feels cold in his feet as water is seeping through his shoes. He is feeling heavy in his eyes also. He finds it difficult to walk further as the ground is very slippery. He wants to take some rest, but there is no place to stand and save oneself from the rain. This makes the poet tired. Question number 4 is what has darkened the evening of poet's life? Loss of hope has darkened the evening of poet's life. Discuss the poet regret in the poem. पोएट किस बात पे पछताता है, किस बात पे उसको पछतावा है. The poet recalls the memories of his childhood and regrets that the days gone by do not return. गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा. In his childhood, he would stand alone in the courtyard and enjoy the sound of cymbals. वो बचपन में वो अपने लान में यानी कोर्टयार्ड में बाहर सहन में खड़ा रहता था और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो वो सुना करता था. In contrast, the present life of the poet is full of despair. उसके बरक्स अब इस पोएट की जो लाइफ है जो बहुत बिल्कुल despair है, नाउमीदी है, उसको डिप्रेशन है. The clouds of trouble and depression have surrounded him in his old age. There is no joy or hope left for him. Hence the poet wants to enjoy those sweet moments of the past again, but deeply regrets that he cannot bring back the times that are past and gone. तो बच्चों ये है हमारे आज की पोएम का जो इसकी हम एक्सरसाइज थी वो हमने पढ़ी. अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कमेंट द इमेजरी यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम.
यानी कि किस किस्म की तस्वीरें, मतलब किस किस्म का अक्स उसने बयान किया है इस पोएम में। तो ये भी आप लिख सकते हैं अपनी कापी पर और याद भी करें। Comment on the imagery used by the poem in the poet in the poem. The poet creates a clear picture of an evening wet with rain. With the use of imagery, we can see clearly in our minds eyes and the doors, windows, and the awning of the house is wet with rain. We can see the cool breeze stirring the leaves of the banyan tree. We can see rain water seeping through the poet's shoes and also the wet collar of his coat. ये मतलब इन इवनिंग वेट विद रेन, एक शाम जो जिसमें बारिश हो जाती है और सब कुछ वेट हो जाता है। तो इस किस्म की एक पोइट जो है वो एक पिक्चर बनाता है अपने माइंड में और इस पोएम के ज़रिए हमें सिखाने की कोशिश करता है। वी कैन सी द स्लिपरी ग्राउंड, द हाउसेज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स and the light of the earthen lamp is in a wayside modest inn. We can visualize clearly the child standing alone in the courtyard and listening to the sound of cymbals. Each description spring alive before our imagination due to the imagery used by the poet. तो ये है हमारी आज की पोएम की एक्सरसाइज। तो कल हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। तो आप इसको अपनी कापी पे लिखें, याद करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर समझ में ना आए तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे लिख सकते हैं कहाँ से आपको समझ नहीं आया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।